All right, a very good evening to all of you. Am I clearly audible and visible to you all? The pin is 8964716. Let me show it to you also. I hope now the pin is clearly visible to all. It's 8964716. Quickly join in. So we have a kind of updated Kahoot with us. It's 8964716. You want me to pin it up? All right. Let's just quickly join in. We wait for another 1 minute for everyone to join. Is there anybody who need helps with how to join with the quiz? All the key events are mentioned in the description. Still, you can go to www.kahoot.it and you can just enter the game pin and you will be able to join. Zoya, you just have to go to www.kahoot.it and you have to enter the game pin 8964716. Let me inform all of you, we have 100 questions in the Kahoot. The Kahoot has the entire 11th syllabus and all the 100 questions cover all the units. That is your classification unit, your morphology unit, your cell unit, your plant physiology, your animal physiology. Okay, they will run a little fast, so you have to be very quick. The winner, only the first ranker will get the prize money of 500 rupees. So kindly, मैं पहले ही बता दूं, जो भी win करे,
वो अपनी रैंक का स्क्रीनशॉट रखे जो उसके डिजिटल डिवाइस पे आ रहा है। आप जिस भी डिजिटल डिवाइस पर क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट of your rank and share it with us so that we can distribute the prize money to you. If you don't have the screenshot, there is no proof that you won the quiz. Okay, I repeat, please make sure to take a screenshot of your rank on your digital device to claim the prize money. Okay, are we ready? So I have put myself on the top of the screen only so that you all can see the question clearly. You will get 15 to 20 seconds to answer each question. And आप जिस भी डिजिटल डिवाइस से क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे क्वेश्चन पहले आएगा YouTube के स्क्रीन पर, जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर थोड़ा लेट आएगा, तो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग. ऑल राइट. So they have kind of revised your faces for Kahoot. Alright, let's get started. इनमें से कौन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है सिर्फ? So you have to choose the kingdom. Quickly, you have to find the right answer. Perfect. Monera has unicellular prokaryotic organisms. बाकी सब में eukaryotic होते हैं. Next please. ETS is electron transport system. है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपको फोटोसिंथेसिस में देखने मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपको रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस में, उसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऑक्सीडाइज कर कर वापस रिड्यूस भी कर सकते हैं? वंडरफुल. आयरन एंड कॉपर आपके साइटोक्रोम और आपके फेरोडॉक्सिन आयरन वाले. इसमें से किस किस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है सेल में? So it's a cell and a biomolecule combined question. न्यूक्लियोइड, न्यूक्लिक मटेरियल है डीएनए. राइबोसोम, राइबोसोमा इज अ बॉडी ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो आरएनए, बोथ 2 and 3. Slime molds which belong to your kingdom Protista. The single cell eukaryotic fungi like organisms जिनको हम slime molds बोलते हैं. Physarum जो एग्जाम्पल है, Dictyostylum and Physarum. They are dispersed by air currents. They are the only structure which have cell wall, cellulosic cell wall, which is present in slime molds. And उनके पास इतनी thick cell wall होती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं. They are perennial. Next. Biological classification.
Virus, viroid, prions. Prions are abnormally folded proteins which cause diseases like. If we go higher from species to kingdom in taxonomic hierarchy, the number of common characters. Mark the question. The number of common characters. When we say number of common characters means कितने सारे characters common होते हैं, ज्यादा characters common होते हैं या कम characters common होते हैं? Very good. कम characters common होते हैं. As we go up, एक या दो ही चीज common होती है. ठीक है, number of organisms ज्यादा होते हैं. Which is the incorrect statement. देखिए, काला ग्रीन alga है, पायरेनोइड्स में प्रोटीन्स और स्टार्च होते हैं. ब्राउन algae से एल्जिन लेते हैं सेल वॉल से. ब्राउन alga में मोटाइल स्पोर्स होते नहीं है, टू अनइक्वल flagella वाले स्पोर्स which are present laterally. So they have zoospores, piriform shaped. ब्रायोफाइट्स, मॉसिस के बारे में आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. ब्रायोफाइट्स आपके पहले लैंड प्लांट्स है जो यूजुअली वाटर सोर्स के पास पाए जाते हैं. The germination is direct और indirect. जो डायरेक्टली आपका गैमीटोफाइट वाला जनरेशन प्रोटोनीमा लेकर आता है. Easiest question of the entire Kahoot, believe me. Pollination. Beta, ribosomes are made up of ribosomal RNA. RNA is nucleic acid only, na? Prothallus and protonema. If you remember, heart-shaped prothallus is what you observe in pteridophytes. Protonema of mosses. What are these? Mosses are your bryophytes. These are related to the gametophytic generation in bryophytes and pteridophytes. This is a diagram. What does this diagram show? Which modification of root do you see? Pneumatophores, the respiratory roots in rhizophora, mangroves में जो देखने मिलती है. मिसमैच पेयर ढूंढना है आपको. ठीक है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू, आपने प्लांट फैमिलीज जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ी है, and symmetry of the flower. Part of the flower, its symmetry, its function. Very good. काना asymmetrical होता है. देखो, चिल्ली belongs to potato family. Potato family radial symmetry show करते हैं, ctenomorphic. ठीक है. कासिया, बीन, गुलमोहर, ये सब bilateral symmetry show करते हैं. थैलेमस swollen part होता है. Mismatch ढूंढना था. Mismatch. काना is not zygomorphic. काना is asymmetric. Persistent sepals is a character of the member. जब आप families पढ़ते हो, Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae,
तो उसमें सिर्फ फ्लावर नहीं पढ़ते, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर सब पढ़ते हो। एंड उसमें फ्लावर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो ये जो कैलिक्स होता है, persistent calyx is what we see in tomatoes in potato family. इनमें से कौन सा सारे पोटैटो फैमिली के है? The second one, your tobacco, your tomato, Atropa belladonna, these are all potato family. Petunia, all potato family. Aloe and tulip, lily family. ठीक है, पिटूनिया पोटैटो फैमिली, अट्रोपा पोटैटो फैमिली। डेड प्लांट टिश्यू, जिसमें डेड प्लांट सेल हो। और डेड प्लांट टिश्यू कौन सा वाला होता है? एक स्टोन सेल्स होते हैं जिनको हम स्क्लेरीड्स बोलते हैं, और एक पतले लंबे फाइबर्स। स्क्लेरीड्स आर स्टोन सेल्स, दे आर नॉट थिन। हमारी प्लांट एनाटॉमी में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द अदर लेयर्स of the plant body except two layers or two kinds of tissues. उसमें एपिडर्मिस नहीं आता है और उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं आता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं आता है, बाकी सब ग्राउंड टिश्यू का हिस्सा होता है। ओल्ड ट्रीज माने जो ट्री बार्क है, उसके अंदर जो सेकेंडरी जाइलम है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कौन सा वाला जाइलम होता है? सेकेंडरी जाइलम इज एनाटॉमिकली नोन एज वुड। तो विच वुड इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ दैट प्लांट? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि वो नॉन कंडक्टिंग है, रेजिस्टेंट है, इट इज नोन एज हार्टवुड। इक्वेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कौन सी सीक्वेंस फॉलो करते हैं? द वन व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इट्स एंजाइम सबस्ट्रेट। एंड में कॉम्प्लेक्स थोड़ी बनते हैं, एंड में एंजाइम और प्रोडक्ट फ्री हो जाते हैं। Turgor pressure and osmotic pressure. If you remember, when we try to decide the direction of movement of water in transport in plants, we can decide the direction by water potential, we can describe the direction by concentration of the water, and we can decide the direction by suction pressure or diffusion pressure deficit. जो हम कैलकुलेट करते हैं ओपी माइनस टीपी, जब दोनों इक्वल होंगे तो डीपीटी जीरो, नो मूवमेंट, नो डायरेक्शन। Which one is odd with respect to external factors that affect transpiration? We know transpiration is the process of loss of water in the form of water vapor. Okay. Now this transpiration is performed by leaves via stomata. Transpiration has many factors affecting it like wind, temperature, pressure, humidity. These are all external factors. Water status of the plant is the internal factor. Okay. External factor would be water status of the atmosphere, which is humidity.
Now, carbon fixation and nitrogen fixation. Carbon fixation is photosynthesis, where carbon dioxide is fixed to form glucose. Nitrogen fixation is fixation of or reduction of nitrogen to ammonia. कौन सा जो दोनों करते हैं बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते. हमारी फोटोसिंथेसिस तो है बट अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, वो बैक्टीरिया करता है. कौन सा बैक्टीरिया? रोडोस्पाइरुलम, which is an anaerobic nitrogen fixing bacteria, and it is also a photosynthetic bacteria, the purple sulfur bacteria, which shows anoxygenic photosynthesis. Wonderful. PS1 and PS2, these are photosystems. Photosystems which are involved in photosynthesis. These are chlorophyll molecule and your pigment molecules which are organized in the form of a core and antenna. Okay, which work at different wavelengths. PS1 works at 700, PS2 works at 680, and they are located in specific positions in the plant body. PS1 is present in both your stromal lamellae as well as your granule lamellae on the free surfaces. PS2 सिर्फ अप्रेस्ड surfaces in granule, ग्राना में होता है, वो सिर्फ वो स्ट्रोमल लैमेले में नहीं होता. So there's a huge up and down in the scoreboard now. Biosynthetic phase of photosynthesis depends on which products of light reaction. हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो कि आपका हिल रिएक्शन होता है, उसके अंदर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर उस एनर्जी को बायोसिंथेटिक वेज में यूज करते हैं. वो कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो हम बनाते हैं? वेरी गुड. NADPH एंड ATP इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कोई लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वो तो रॉ मटेरियल है. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट. ये ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. एंजाइम एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. आपको बताना था इनकरेक्ट क्या है बेटा. बी तो वो पॉइंट है ना जब वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी पे हो गया कि नाउ इट इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर. नाउ इट विल स्टॉप अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट विल बिकम अ स्टैग्नेंट. बाकी सब सही था, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो वो पॉइंट बी था. Which of the following is not an intermediate of Krebs cycle? Your tricarboxylic acid cycle, your citric acid cycle, उसके बीच में नहीं बनता है. वो जो first molecule formed is a 6 carbon molecule, the tricarboxylic acid molecule, the citric acid molecule. फिर वो 6 से 5, 5 से 4 and then they keep on changing. एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बनता है, मेलिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है, कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड नहीं बनता. Which of the following growth hormone is associated with flowering in mango? स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैंने स्पेशली बताए थे कि ये जरूर याद कर लेना, है ना. सीड सेट इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन मैंगो, ग्राउंडनट, पोटैटो ट्यूबर्स, राइस, इन सब के लिए वो एक ही है. इट्स इथाइलिन. ठीक है. ऑक्सिन इज फॉर पाइनएप्पल. आपको गलत मैच ढूंढना है, फॉल्स मैच ढूंढना है. देखो क्रांस एनाटॉमी आपकी C4 प्लांट्स पे होती है. प्लाज्मोलाइसिस लॉस ऑफ वाटर होता है. वेरी गुड. इट हैपेंस इन हाइपरटोनिक मीडियम. ओनली सेकंड वाज रॉन्ग, रेस्ट ऑल वाज करेक्ट.
वैक्यूल के बारे कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है, वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेली. Which of the following statements is not correct about it? जिसको हम स्टोर हाउस बोलते हैं. Wonderful. It does not occupy 90% of the space in the plants. In plants it does, in animals it does not. Animals, there are very small, minute vacuoles present. The end part of the chromosome is known as, we have various regions of a chromosome. Okay, we have the chromatids, we have the primary constriction, we have the secondary constriction, we have the end. And the end is known as a telomere, जिसके ऊपर एक एंजाइम भी होता है कि टीलोमरेज. टीलोमेर का काम होता है टू मार्क द एंडिंग ऑफ द क्रोमोसोम, कि यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है. अब और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं हो सकती और डिवाइड नहीं हो सकता. अगर ये टीलोमेर हट जाएगा तो रिपीटेड डिवीजन होगी. तो टीलोमरेज की वजह से रिपीटेड डिवीजन होती है, जो आपको कैंसर सेल्स में देखने मिलते हैं. On the basis of the presence of the primary constriction, that is centromere, we say that our chromosomes can be metacentric, submetacentric, acrocentric or telocentric. Which of the following is described in this particular situation? When it is very close, we say it's acrocentric. Very good. Cytokinesis is the process of division of the cytoplasm, which occurs with the help of cell plate in plants. Cell plate, which is formed by a phragmoplast, which is the vesicles from Golgi, and which is done in animals by furrowing. So the direction of the furrowing is from outside to inside, centripetal. In plants, the cell plate formation is centrifugal from inside to outside, center to periphery. अब हम बोलते हैं माइटोसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन, जो सेल डिवीजन करने के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं. इफ देयर इज एनी वन व्हिच इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी में डिफरेंस आ जाता है. और अभी हमने वो चीज डिस्कस भी करी है. इन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस तो वैसे ही होता है. एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज तो वैसे ही होते हैं, राइट? व्हाट इज डिफरेंस इज साइटोकाइनेसिस. Starch and cellulose, they are both polysaccharides. They are both carbohydrates. They are both found in plants, but the only thing that is different in them is, very good, that starch can hold iodine because it has an alpha helix structure. Cellulose cannot because it has a beta pleated structure. Peptide bond, the bond which is formed between two amino acids. Hi Jay, I completely remember you. You always ask me questions which are irrelevant. Aren't you the same, Jay? If I'm not wrong. Very good. Beta, enzymes are proteins. Proteins are polypeptides. They will have peptide bond in them. पॉलीपेप्टाइड में भी होगा, प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स में भी होगा. अमीनो एसिड एक अकेला है, उसमें कैसे होगा पेप्टाइड बॉन्ड? दो अमीनो एसिड के बीच में होता है, अमीनो एसिड के अंदर थोड़ी होता है, उसमें तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. These are all fungi. Aspergillus, claviceps, neurospora. If you know to which category they belong, you can find out what is the common thing between all the three.
Very good. They produce conidiospores. Conidiospores are asexual chain spores. And they all belong to Ascomycetes. Which character is common in both Monera and Protista? The first two kingdoms that we read. Very good. Both are unicellular. Monera is prokaryotic, Protista is eukaryotic. Which one of the following pair is correctly matched? सही वाला बताने की किसमें? These are all the modifications. Stem modifications, leaf modifications. You have to find out which one is correct. Examples दोनों के you have to find out which is correctly matched. सब गलत है, बस एक ही सही है. Very good. Underground stem is called, beta phylloclade is not Australian acacia. Australian acacia is when the petiole takes up the function of photosynthesis, which is a modification of leaf जिसको हम phyllodes बोलते हैं. Phylloclade तो आपको stem में दिखता है कि जिसके अंदर stem photosynthetic हो जाती है, जैसे कि euphorbia में, जैसे कि opuntia में. Phylloclade and cladode जो asparagus में होता है. फाइलोड होता है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में, द फोटोसिंथेटिक पिटियोल. Very good. It has an open bicollateral system which is seen in dicot stem, because open is always seen in dicot. हम बोलते हैं C4 plants show better photosynthesis than C3. They are more efficient. देखो, one of the reasons is कि transpiration and photosynthesis they are compensatory. जिसमें transpiration ज्यादा होगा उसमें photosynthesis कम, जिसमें photosynthesis ज्यादा होगा उसमें transpiration कम. तो क्योंकि वाटर लॉस भी प्रिवेंट होता है C4 में, तो उनमें ट्रांसपिरेशन कम, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, प्लस उनमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है, वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता है. Fermentation is a type of anaerobic respiration. Anaerobic respiration, which we see in microbes, the way or the mode from which they get energy. The only purpose of fermentation is to, very good, oxidize NADH so that they can give continuous supply of ATP because it is the H donor. Wonderful. Come back, Pragya. Wonderful comeback. Genetic dwarfism. Dwarfism is short length. The one which is going to be responsible for elongation would be responsible for overcoming the genetic dwarfism. Which one is that? It's gibberellins. It got elongation. Elongation of the internodes, sugarcane. Which is the longest phase of the cell cycle? When we say that a human cell divides for 24 hours, the 23 hours of its division is interphase. The 95% of the phase of the cell cycle is interphase.
The ratio of oxygen and carbon atoms, we asked this question with respect to respiration and biomolecules, that उसका जो efficiency होगा respiratory question will be dependent on उसके पास कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन है. जितना ऑक्सीजन उसे बाहर से चाहिए, इसका मतलब उसको ज्यादा इनपुट चाहिए, वो respiratory question will be less than 1. Reabsorption, the tubular reabsorption, when we're talking about kidneys, nephron. What is true about tubular reabsorption in the kidney nephron? All of the above statements are correct. Which substances are reabsorbed actively in nephron? Active absorption, when we absorb with the help of energy against the concentration gradient. Passive, when there is no energy involved. Only diffusion. So water is always absorbed passively. तो जिसमें water है वो तो anyways भी नहीं होगा. Glucose and sodium show active absorption, even amino acids. What is going to be the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air as compared to those in the atmospheric air? तो हमें alveoli के बारे में बताना है कि alveoli की कैसी होगी as compared to atmosphere. Atmosphere में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, alveoli में कम होती है, तो PO2 लेस. और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, alveoli में ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा. Very good. The conducting part of the respiratory tract, we say the respiratory system is divided into two parts, the upper and the lower. The upper, which is the conducting part, and the lower, which is the exchange part. The conducting part, which forms the dead space and holds up a volume of about 150 ml. The exchange part, the alveoli, which is responsible for exchange of gases with the blood. The conducting does not take part in exchange of gases with the blood. Deficiency of which of the following results in anemia? So we have a particular type of anemia which we say is the pernicious anemia. Which of the following is responsible for the pernicious anemia or the megaloblastic anemia or the lack of mature RBCs when the RBCs are immature? Immature RBCs because of deficiency of vitamin B12, which is absorbed by Cassier's intrinsic factor, which is actually a form of folic acid also, which requires iron. So all of these. Maltase. Maltase is a sugar digesting enzyme which is found in the gut. Gut means a gastrointestinal tract. Okay, maltase is a disaccharide which actually dissolves the two sugar molecule maltose पे act करने वाला, into glucose plus glucose, and disaccharidases are a part of your intestinal juice, and intestine has a basic pH more than 7. All right, at half of the quiz now. Select the incorrect option with regard to liver. कि liver हमारा कैसा structure है, उसका functional unit क्या है. मुझे incorrect बात बतानी है. सब बातें correct है एक को छोड़कर. Very good. It is located in the abdominal cavity just below the diaphragm, not above. अब आप बताओ जब इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम का क्या होता है?
It contracts and it flattens. Which of the following are the examples of chemical neurotransmitters except one? सब चीज न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगी, एक चीज नहीं करती है. ऑर्निथीन. बेटा ग्लाइसिन एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. एसिटाइल कोलिन भी करता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी करता है. ऑर्निथीन नेवर एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. Which example or which organism is considered as a slipper animalcule? Slipper animalcule. Animalcule is for an animal which is a single cell animal. A protist. All of them are. पैरामीशियम. यूग्लिना भी प्रोटिस्ट है, अमीबा भी प्रोटिस्ट है, ट्रिपैनोसोमा भी प्रोटिस्ट है. जैसे अमीबा सार्कोडीना राइजोम्स में आता है, ट्रिपैनोसोमा जूफ्लैगेलेट में आता है, यूग्लिना यूग्लिनोइड्स में आता है, पैरामीशियम सीलिएट्स में आता है. They are all protozoa which belong to protista. जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एनिमल्स इज बेस्ड ऑन coelom, symmetry, organization, all of these. Chalo. One question which has 100% correct answer. Male cockroaches जिनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल कॉकरोचेस के पास नहीं होता, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? If I start telling from the backwards, phallomeres are the covering of the openings. दोनों के पास होते हैं. Anal pore is the opening of the anus. Mouth and anus दोनों के पास होता है. Anal cerci भी दोनों के पास होता है. Anal styles is the one which is present only with males. इसमें भी गुंजाइश थी 6 लोगों की गलत करने की, होनी तो नहीं चाहिए थी. Chlorogogan cells of Phenetima. Phenetima is earthworm. Are functionally similar to. It's basically analogous organs. Functionally similar is analogy. Analogy is with respect to evolution. तो ये हम homologous analogous की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना. विद रिस्पेक्ट टू अर्थवर्म हमारे कौन से सेल्स हैं? हमारे लिवर सेल्स और उनके क्लोरागोगन सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट. Which is not an example of specialized connective tissue? Your NCERT says that the connective tissue can be divided into connective tissue proper or specialized connective tissue. So connective tissue proper is further divided into loose and dense, and then specialized is divided into blood, bone, cartilage. तो कौन सा है इसके अंदर से? आपके टेंडन्स जो कि आपके connective tissue proper, dense regular connective tissue proper है. All right. Pseudocoelom is found in. The only phylum which shows pseudocoelom. Could have been examples given also. Pseudocoelom is seen only in one of the phylums, one of the invertebrates. You have platyhelminths as acoelomate, you have ascahelminths as pseudocoelomates. Cnidaria और टीनोफोरा में तो mesoderm होता ही नहीं है, तो सीलोम तो होने का मतलब ही नहीं है. The body of ctenophorans bear dash row of ciliated comb plates. So the ciliated comb plates which help them in locomotion, which is a characteristic feature of your ctenophora, which divide their body into a biradial symmetry. वो जो median plates होती है वो कैसी present होती है? They are 8 in number and they are present externally. Very good. Almost all of you got that answer correct. Release of GABA, that is gamma aminobutyric acid,
है ना. It is a kind of inhibitory neurotransmitter. So there is a difference in the activation of an activating neurotransmitter and an inhibiting neurotransmitter. An activating neurotransmitter is representation for depolarization of the postsynaptic membrane. An inhibitory is responsible for hyperpolarization of the postsynaptic membrane. ठीक है, तभी पता लगता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को कि एक्टिवेट करना है कि इनहिबिट करना है. ओके, इनकरेक्ट पेयर बता दिए. एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन जो सेंटर ऑफ द बॉडी है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो साइड ऑफ द बॉडी है. ठीक है, इसमें सारी चीजें एक्सियल स्केलेटन की बताई गई है. ठीक है, कौन सी बात गलत है बेटा? सेकंड बात भी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड गलत है. एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है, स्कल में 29 होती है, ये वाली और ईयर ऑसिकल्स मिलाकर. वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स आपकी फॉल्स रिब्स 8 9 10. बेटा वर्टिब्रोस्टर्नल आपकी फर्स्ट 7 पेयर्स. कैल्शियम आयन बाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मसल प्रोटीन. जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. दिस कैल्शियम बाइंड्स विद अ प्रोटीन सो दैट इट लीड्स टू द अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्सिन. To whom does this calcium bind? Very good. This binds to calcium troponin. Okay. चले. Let's go forward. Prothrombin, which gets converted to thrombin, and then thrombin, which converts fibrinogen to fibrin, and then fibrin, which forms a blood clot. This cascade, because it is formed by liver. Okay, prothrombin is formed by liver. It's a protein which is synthesized. ठीक है, clotting factors जो blood में आते हैं, blood cells bone marrow बनाते हैं. Clotting factors are proteins which are synthesized by liver, the most metabolic organ of the body. Adrenaline क्या है? Very good. Adrenaline is a neurotransmitter as well as it's a hormone which is secreted by endocrine gland, which are ductless gland. It's an intercellular messenger, not intra. Osmotic concentration of the renal cortex and medulla ranges from 300 to 1200 because of hyperosmolarity due to release of dash and dash chemicals in the medulla, जो कि आपकी renal tubules ही छोड़ते हैं medulla में उसको concentrated बनाने के लिए. With the help of counter current mechanism. वो कौन सी दो चीजें हैं जो renal medulla को concentrated रखती है? Your sodium ions and urea. Sodium ions along with chloride जो passively diffuse करते हैं तो बोलते हैं NaCl and urea. You have to match the column. ठीक है, पहले दो करके ही आपको पता लग जाना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा. इट्स द थर्ड ऑप्शन. कॉर्पस कैलोसम जो कनेक्ट करते हैं दोनों बंडल्स ऑफ द सेरिब्रम को हम बोलते हैं. और hypothalamus, thalamus, all the functions and the parts of the brain. You have to tell what is ABCD. ठीक है, we have an image and you just have to identify what is ABCD. पहले दो, पहला और आखिरी देखकर ही आप बता सकते हो कि वो क्या आंसर होना चाहिए.
It is very easy in such kind of cases. परफेक्ट. बटरफ्लाई पहला है और किसी में है ही नहीं, सीधा सीधा भाग कर देना था. क्विक ऐसे ही भाग करते हैं. करेक्ट कॉम्बिनेशन. It is with respect to the phylum and the examples. It's the P hemichordates. देखो लोकस तो इंसेक्ट हो गया ना, अप्लेजिया सी हेयर हो गया, आपका मोलस्क हो गया, लॉलिको भी मोलस्क हो गया, पर लिबिलस किंग क्रैब हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, असीडिया ट्यूनिकेट्स हो गए, यूरोकॉडेट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको. So you have to actually remember the examples. बेटा सीरियस साल्पाडोलोलियम सब यूरोकॉर्डेट है. ब्रिंकस टोमेटा एम्फिऑक्सिस लैंडस्लेट कुछ भी बोलो वो सिफेलोकॉर्डेट है. All chordates are vertebrates is wrong. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ये incorrect statement है. Retina, the innermost layer of the eye, has cells arranged. या तो inside to outside पूछते हैं या outside to inside पूछते हैं. वो outside to inside क्या होती है? सबसे बाहर की तरफ आपके पास कौन सी वाली सेल्स होते हैं? You have photoreceptor cells on the outside, then bipolar, and then ganglion cells. Very good. Let's go. Nucleases are found in. So the digestive juices which we have, the intestinal juice, the pancreatic juice, and your bile juice with gastric juice, and the one which is present in the oral cavity saliva, which has the enzyme nuclease. The nucleic acid digesting, the bigger components are digested by pancreatic juice. The smaller components are digested by intestinal juice. Nucleotidase या nucleosidase आपका intestinal juice में. Glycosuria, presence of sugar in urine. In which condition do you see presence of sugar in urine? In diabetes mellitus only. In diabetes insipidus, it's just dilute water which goes out. Has nothing to do with glucose. Neural signals from which center can reduce the duration of inspiration. हम बोलते हैं rate of respiration. उसका जब हम regulation करते हैं, तो neural regulation of rate of respiration is done by centers which are present in pons and medulla. Medulla is responsible for maintaining the regular rhythm, whereas the centers which are present in the pons can alter the duration of inspiration. They reduce the duration of inspiration, and they are responsible for rapid breathing, the pneumotaxic center. Semilunar valves are closed during. Semilunar valves कहाँ present होते हैं? Like the cuspid valves, they are present in the atrioventricular valve. ठीक है, वैसे ही ये जो semilunar valves होते हैं, they are present at the junction of the ventricle and the atria. जब जब ventricular filling हो रही होगी, तब तब तो वो बंद हो गए. ठीक है, और जब atrial systole होता है, तो ventricular diastole ही होता है. तो all of the above situation. In axon, which of the following is absent? देखो, axon is a part of a neuron which is responsible for conduction of the nerve impulse, है ना? Which actually shows the action potential at
transmission of action potential due to flow of ions. Now, which of the following structures of the cell are absent in their axon? After all, है तो पूरा का पूरा cell ही. The nacelles granule are absent. Mitochondria are present in a axon. FYI. How many Malpighian tubules are present in a cockroach? We say that cockroach has foregut, midgut, hindgut. At the junction of foregut and midgut, we have about 8 to 16 Malpighian hepatic CK. And at the junction of midgut and hindgut, we have about 100 to 150 Malpighian tubules. Very good. Which of the following cell junction is found in epithelial tissue and help to stop substances from leaking across the tissue? Cell junctions हमने पढ़ी थी. हर तरीके की टिश्यू देखी जाती है. epithelial, muscular, nervous and even your connective, है ना. नर्वस में हम उसको साइनैप्स बोलते हैं. मस्कुलर में हम उसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, जो कैलेटेड कार्डियक मसल्स में देखी जाती है. कनेक्टिव टिश्यू वैसे ही सब कनेक्शंस करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू में वो टाइट जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं और अडहियरेंस जंक्शंस होते हैं. लीकेज को रोकने वाले टाइट जंक्शंस होते हैं. ओके. In which animal nephridia help in osmoregulation and excretion? The organ of excretion in different phylums is a very important question. Platyhelminths में कौन सा organ of excretion है? Cockroach में कौन सा organ of excretion है? Mollusk कैसे excrete करते हैं? नेफ्रीडिया किसका organ of excretion है? It is seen in earthworm, जिसको हम बोलते हैं. 3 टाइप के नेफ्रीडिया उसके पास होते हैं. Ferretima posthuma is the scientific name for earthworm. Libellus is king crab. ये सब बाकी Anopheles, locust, libellus, they were arthropods. Only Ferretima was an annelid. आपको XYZ है जो फिगर में आइडेंटिफाई करना है. This is a structure of an actin showing F-actin, tropomyosin and troponin. You have to identify what is A, B and C, rather X, Y and Z. So as you can see, X is your troponin, Y is your tropomyosin and Z is your F-actin. चले जी. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको. सारी गलत है, सिर्फ एक सही है. तो बताओ कौन सी वाली बात सही है. 130/90 is a higher blood pressure. Hypertension. Angina pectoris, the pain in the left side of the chain, is seen only in women. Rather, आज की डेट में तो more men are suffering from heart attacks. Heart failure and cardiac arrest are the same? No. Heart attack is sudden damage to the heart muscles when there is insufficient supply. Wrongly matched बताना है. माने सब में मैचिंग ठीक है, एक में गलत है. वो कौन सा है जो गलत है? Very good. Gout is the accumulation of uric acid, not lactic acid. You're almost on the verge of ending the quiz. Which of the following figure is correctly matched with the stage of cell division? Now, if you know, मेटाफेज के अंदर कॉन्ग्रेशन देखा जाता है. मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट देखा जाता है. एनाफेज 2 is just like mitosis. और mitosis के एनाफेज में there is splitting of centromere and separation of chromatids. Anaphase of mitosis और एनाफेज ऑफ मियोसिस के अंदर पूरा पूरा क्रोमोसोम जाता है. तो सेकंड इज द करेक्ट. थर्ड में तो एनाफेज ऑफ मियोसिस दिख रहा है, माइटोसिस नहीं. और मेटाफेज 2 नहीं है, वो मेटाफेज 1 है ऑफ मियोसिस. सिफोनोगैमेट प्लांट. आपको पता है सिफोनोगैमी क्या होती है? Siphonogamy is the type of fusion of gametes or something that helps in the fusion of gametes with the help of pollen tube formation. वो सिफोनोगैमस प्लांट्स होते हैं जिनमें पोलन ट्यूब बनके फिर फर्टिलाइजेशन होती है और मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट पोलन ग्रेन बना के किया जाता है. तो एल्गे तो वाटर में फर्टिलाइजेशन शो करते हैं.
ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, हम बोलते ब्रायोटेरिडो को दिया था एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडो एंजियोस्पर्म्स ऐसे जो सिफोनोगैमी शो करते हैं जिनके मेल गैमीट्स मोटाइल नहीं होते। So you have to look at the image and find the answer. दो तरीके की लीव्स दी हुई है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये ए लीफ कौन सी है और बी लीफ कौन सी है। What type of morphology do these two types of leaves show? So A was your pinnately compound leaf that you see in usually नीम के पत्तों में, है ना? And B was your palmately compound leaf that you see in silk cotton. Dicot stem cortical layers below hypodermis. ये किस तरीके के सेल्स होते हैं? कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस के नीचे डाइकॉट में, देखो डाइकॉट का हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस और उसके नीचे जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं दोज आर पैरेनकाइमेटस। ठीक है ना? स्क्लेरेनकाइमेटस तो आपको हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोलेनकाइमा फॉर्म्स द हाइपोडर्मिस। वो पूछ रहा है हाइपोडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स के सेल्स है वो किसके बने हुए हैं? वो पैरेनकाइमा के बने हुए। The following diagram shows a cell undergoing prophase 1. ये शुरुआत का डायग्राम है। अब वो बोल रहे हैं जब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 हो जाएगा, इंटरकाइनेसिस हो जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 भी हो जाएगा, तो बताओ एंड में कैसे दिखेगा? The daughter cell formed will be with one chromatid only. The daughter cell will have only one chromatid. End में कैसा दिखेगा? माने end of meiosis, the meiosis 2 भी खत्म हो जाएगा, तो एक एक chromatid वाला सेल दिखेगा ना। सिर्फ 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर किए। सेल डिविजन थोड़ी कमजोर है। Again, you have to look at the image and answer. So we have a table which tells me whether it is going to be mitotic or meiotic. Restoration of, very good. Restoration of diploid phases by fertilization. Sudden abrupt change. In biomolecular analysis, the ash contains all of the following except. हम बोलते हैं ना जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं कि भाई एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, है ना, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके आपके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, और जब हमें केमिकल एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स करना होता है तो हम एश एनालिसिस करते हैं जिसमें सब होता है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, तो न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। How many of the following statements are true or false? The two statements which are given. Tell how many are true, how many are false. Both are true, both are false. One is true, one is false. Which one is true, which one is false? Both are true. ठीक है ना? That is false. Protective epithelial. So basically we're talking about an epithelial tissue which provides protection and has limited role in absorption and secretion. वो कौन सा वाला epithelial tissue है? These are all different kinds of epithelial tissue. So we say the compound epithelium is a stratified epithelium, layered epithelium, which can be keratinized or non-keratinized, has protective function but limited role in secretion and absorption. In sponges, kingdom Animalia,
द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, हम बोलते हैं कि जो उनका वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, न्यूकॉन टाइप, जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो क्या करने में हेल्प करता है बेटा? वो सब कुछ करने में हेल्प करता है, यू नो, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, रिप्रोडक्शन, आपकी गैमीट का अंदर, क्योंकि दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो गैमीट अंदर की तरफ मूव करेगा, ये भी कौन शो करेगा? आपका वाटर कैनाल सिस्टम, एवरीथिंग. Now they're talking about the receptors which are present in the aortic arch and carotid artery. These are chemoreceptors which judge the concentration. ठीक है? Which judge the concentration of certain chemicals in the blood and then they give message to the brain के अंदर जो आपकी respiratory centers है, pons और medulla में. तो ये किस किस की concentration को judge करते हैं? Both A and B, carbon dioxide and H plus ion concentration, दोनों को judge करते हैं. ऑक्सीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है कि ऑक्सीजन ज्यादा है बॉडी में या कम है. यहाँ पे बर्ड्स के एग्जाम्पल दिए, साइंटिफिक नेम ऑफ बर्ड्स दिए, जैसे कि टीनोडाइट्स है, कोलंबा, कॉर्वस, पावो, पिस्ताक्यूला एंड स्ट्रूथियो. इसमें से कितने फ्लाइंग है ये बताने हैं. सिंपल एक्सक्लूजन मेथड यूज करो, जो फ्लाइटलेस है उनको निकाल दो, तो जो बच गए वो फ्लाइंग है. तो टीनोडाइट्स इज योर डॉल्फिन, फ्लाइटलेस, ठीक है. योर स्ट्रूथियो इज योर फ्लाइटलेस, है ना. So there were three flightless, so four would be flying. There was another one which was a flightless. वो आगे से हट गए तो मैं भी नहीं बोल पाई. Which type of mating should be avoided in biological marriages? This is RH incompatibility. कि किस तरीके का fetus किस तरीके की माँ नहीं रख पाएगी. Which type of mothers are unable to keep a type of fetus? The negative mothers are unable to keep positive fetuses. So mother negative नहीं होनी चाहिए जब father positive हो. Which is correct in case of nerve impulse? कि कोई भी nerve impulse होता है वो किसकी वजह से होता है? All of these is a correct option. Last 5 question. किडनी का साइज, वेट, हाइलम और कॉलम ऑफ वर्टीनी आपको मार्क करने हैं. इसमें से बता दें कि कौन कौन सी मैचिंग जो वो बिल्कुल सही है. वेरी गुड. डी वाला ऑप्शन करेक्ट था और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था. कॉलम ऑफ वर्टीनी इज कॉर्टेक्स व्हिच इज एक्सटेंडिंग इनटू द मेडुला. प्लैटी हेल्मिट्स में कौन से कैरेक्टर्स पहली बार डेवलप होते हैं? प्लैटी हेल्मिट्स में कौन सी चीज पहली बार देखी जाती है? So on the basis of dermal layers, we have diploblastic and triploblastic organisms, right? Diploblastic आपके पॉलीफेरा, निडेरिया, टीनोफेरा, उनके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म होता है. मेसोडर्म पहली बार प्लैटी हेल्मिट्स में देखी जाती है. फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक आर प्लैटी हेल्मिट्स. ए और बी को मैच करना है. बेसिकली आपका प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिसऑर्डर है. So there are three each form Kwashiorkor and marasmus. You just have to analyze कि क्वेश्चनकर और मरासमस में हमारे पास यंग एज और 1 to 5 years और एज, और हमारे पास ऐसा कि जब फैट रिच डाइट हो और प्रोटीन स्पेसिफिकली कम हो, है ना, जिसमें स्वेलिंग भी आए, वो मरासमस. Second last question. Pneumotaxic center is present in the dash area.
Situation addition to rhythm center recognizes dash concentration in dash. This oxygenated deoxygenated refers to the blood. Very good. B is the correct option. Finally, going to the last and final question, which is going to break or make the scene. What is the correct sequence of sound wave? वेरी गुड एक्सटर्नल ईयर फिर ईयर ड्रम फिर बोन्स मिडल ईयर फिर ओवल विंडो फिर कॉक्लिया एंड देन इट गोस द वेव्स गो आउट फ्रॉम द राउंड विंडो so was it a quick revision of the entire 11th all the units enjoyed working around the quiz there was a huge demand कि हमारा 11th almost over हो गया है हमें सारी रिवाइज करनी है so I thought let's go it through with the quiz the complete 11th quiz now ready for the results मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ कि प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट of your digital device saying that you are the winner. Congratulations, Abhishek. Unnati, well done. Pragya, you did very well. So this one plus is number one. Very well done, Pragya Sudipti. Unnati, good job. I've been seeing you all the time doing very well in the quizzes. Perfect. Unnati, did Piyush sir send it forth? No worries. I will do it. तो मजा आया? Do you want to have more such quizzes often? I don't know who's OnePlus. So whosoever is OnePlus, please connect with me on Telegram. I'm on Telegram as Dr. Jyotsana Thakral. Okay, or Dr. Jyotsna, you can find me on Telegram and please share the screenshot. You can also email the screenshot to us at neetodan@gmail.com. We'll be happy to give away you the prize money. Okay? Cool. It was very fun having you all. And we were pretty good with 100 questions. हमने बड़ी जल्दी जल्दी कर लिए. 1 hour we could see it's just a matter of 1 hour you can do 100 questions and we did all the 100 questions with explanation. We started at 5:15, 6:15 we're through with it, 5:10, 6:10. So it is just a matter of 1 hour. So बायो का पेपर एक ही घंटे का होता है या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है सो जितना टाइम आपको वो अटेम्प्ट करने में लगना था ना उतना ही टाइम आपको पेपर में देना है अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को दिस शैल बी योर स्पीड okay not more than 10 seconds to read not more than 10 seconds to find the right answer and not more than 10 seconds to mark it into your OMR 30 seconds is the maximum time you're supposed to take for each question. Zishan, the maximum participants we had for a question was 51. We didn't have much, but nonetheless.
All right, Blue Sky will be waiting for you. Memories, we don't have PDF in Kahoot. We can share the Excel with you on the rapid revision. Okay? जितने आए उनका फायदा हुआ। वो क्या कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। So Kanishk, kindly share the screenshot. Otherwise, the negativity is going to come back to you. If you don't share the screenshot, you don't get the prize money. Tit for tat, negative to negative. Am I right, guys? मुझे भी मजा आ गया. Thank you so much for joining in. We'll be coming up with more. Promise. Take care. See you all soon again.